Welcome to my class. This is SK Raut here. I have brought a very important topic today. Every day I am bringing an important topic for Indian polity. Today I have brought emergency. Emergency in the constitution of India. Okay, we shall follow it. Come and join. Emergency in Constitution of India. The today's topic is very important topic for us for prelim exams also. आम तो बहुत सारा डिस्कसन करूँ माराथन चलती सैटरडे गोटे माराथन भी अच्छी जो मैंने माराथन रे जॉइन करिया कथा कर ठीक अच्छी बहुत एक्सटेंसिवली पॉलिटी हिस्ट्री एगुरा सब रहिबो ठीक अच्छी तो आज मुझे इमरजेंसी डाउट क्लियरिंग पे गोटे करची इमरजेंसी उपरे तो इटा टिके देखिबा हमें तो दिस इज ऑल अबाउट इमरजेंसी को जे इमरजेंसी द डार्क डे ऑफ फ्री इंडिया बोली कह जाई 1975 रो इमरजेंसी टा 75 रो डार्केस्ट डे इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह जाए एवं तापर बहुत सारा अच्छी हमरो सेगमेंट गुरा इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी ऑन जून 25 इंडिया एंटर्ड द 50th year of the imposition of emergency, an extraordinary 21-month period from 75 to 77, which saw the suspension of civil liberties, curtailment of press freedom, mass arrest, the cancellation of elections and rule by decree. So that was therefore a very significant chapter in the constitutional history of India. There was a lot of things happened. There was a threat to the constitutionalism and 75 June 25 1975 in the midnight when India was brought under emergency, unprecedented period, and it hampered many things that saw the suspension of civil liberties, fundamental rights, curtailment of press freedom, mass arrest and the cancellation of elections. Indian Express posted by Indian Express was a dark chapter in the modern Indian history that left a wide-ranging and lasting impact on Indian politics. So that is therefore a very significant chapter in the history of India and wow and why this emergency is there in the constitution. हम आज में देखिए ठीक अच्छी आउ किसी पिक्चर में देख देखो. There are papers that Indian Herald declared it, and therefore many leaders like your Morarji Desai, Advani, and your Ashoka Mehta and Bajpayee were arrested. So many prominent leaders, JP, Jayaprakash Narayan, they were all arrested. Then बहुत सारा opposition leaders arrest ହେଇଥିଲେ even. And these are the types of emergency tinita type room deichi gotela 1962 to 68 71 Indo-Pak war 75 77 political instability by internal disturbance kotha padthila ठीक अछि that was there political instability ba jota hochi amara internal disturbance ba political instability padthila ठीक अछि next asiba me for what is the need for it? Content need here. What is the need for emergency? First of all, remember, emergency is required for many reasons. So, emergency ta prathama mein dekhiba ki emergency ta kahi ki require ach. Is it a necessary evil? First, it is a necessary evil. First, it is a necessary evil. Necessary evil माने कौन जोटा आवश्यक जोटा खराब अनकॉन्स्टिट्यूशनल किंतु दरकार नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमर प्रिवेंटिव डिटेंशन को नेसेसरी इविल को तो एटा मेजर इमरजेंसी काई करा जाना टू प्रोटेक्ट यूनिटी and integrity of the nation. It would measure integrity of the nation.
if there is a threat from anti-national forces, on anti-national elements to the national unity and integrity, then there might be an emergency. To protect the country from war and external aggression, आक्रमण, बाह्य देश आक्रमण, to strengthen internal security, बहुत सारा रीजन है, to maintain constitutionalism, protect constitutional government, constitutionalism को maintain करिया पाए बा secure करिया. Good. Freedom, president's rule is imposed. What was the intention of president rule? President rule was imposed with an intention to ensure that each state is carried on or is administered in accordance with the Constitution of India, isn't it? So therefore, that is called internal security, and to secure financial stability. So these are the reasons we can cite. For emergency. एटा में emergency पे reasons आनी परिबा. ठीक है छी. This is why the needs for look at it. We are coming through. There are different reasons. First of all, it is a necessary evil. And second, that you must remember that these are the reasons why emergency is essential. To protect unity and integrity from external threats, to protect the country from war and external aggression, to strengthen internal security, to maintain constitutionalism, and to secure financial stability. Next asiba mein types. In the Constitution, part 18, part X V triple I, it is article 352 to 360 deals with emergency. And there are three types of emergency dealt under it. Okay, three types of emergencies. National emergency, state emergency বা constitutional emergency भी ताको कहती. Constitutional emergency, ଆଉ ଗୋଟେ financial emergency. And এই যে তিনটা emergency, just a minute. তিনটা emergency is found in, that is article 352, article 356 and article 360, isn't it? These are the three types of emergencies. Article 352 national emergency, article 356 state emergency or the constitutional emergency भी कहती है, और otherwise known as president's rule. राष्ट्रपति शासन कहा जाए. These are the types of emergencies found in the Constitution. All of you must have idea that about. नहीं? Then the
constitutional provision first देखिए national emergency रो national emergency is found in mentioned in national emergency found mentioned in article 352 under ground hela it is declared proclaimed by president on the aid and advice of the union cabinet. Sorry, on the written advice, you can write that. On written advice of the union cabinet. Before 44th Amendment Act 1978, emergency was claimed or proclaimed only on the advice of the Prime Minister. But later, by 44th Amendment Act, there have been lot of changes in the emergency provisions by 44th Amendment Act. And it brought that the President can proclaim national emergency only when there is a written advice from the cabinet as a whole. That is there. Okay, so that is proclaimed by the President, no doubt. But it is under that. Ground hela kono? Ground tinta achi. Gote hela war, out external aggression, बाह्य देश आक्रमण, आ गोटे कौन आर्म्ड रिबिलियन. आर्म्ड रिबिलियन टा भी 44th अमेंडमेंट पर ऐड एटा सब 44th रे ऐड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे ऐड. टेक ए लुक एट दिस. ठीक अच्छी. That is ground है war external aggression. शॉर्ट रे जिबा हमें मेन क्लास उरक रे हमें डिटेल्स जिबा इतरे मु शॉर्ट रे खाली गोटे टॉपिक तुमको आने की देखौची कि केमती टाइप रो हम अप्रोच न होचे सेटा ओरिजिनली सेटा जते बळे ओरिजिनल क्लास रे पढिबा सेते बळे सेगुडा सब आराम से बल से देखिबा कारण तो बहुत बड़ बड़ कथा एगुरा तेणु आम ताको गोटे ओरिजिनल वे रे देखुचे. गोटे मिनिट. ओके सो इटा ग्राउंड कहली ग्राउंड एवं तापर आसला कौन ना पार्लियामेंटरी अप्रूवल এটা হচ্ছে within 1 month from the date of proclamation. Remember, from the date of proclamation, not from the date of reassembly of the parliament. And within 1 month it has to be approved by parliament. ये जो कथा मन रखो कि in case there is no Lok Sabha at the time of proclamation of emergency, Rajya Sabha has the special power to approve the national emergency. That's a special power of Rajya Sabha. Okay, Rajya Sabha can approve it. So therefore, that is in case of Rajya Sabha can, in case there is no Lok Sabha, but Lok Sabha is dissolved,
then Rajya Sabha can approve it, and after Lok Sabha returns, it will approve it or otherwise. Type of majority approval re type of majority hela कौन type of majority हला special majority आगुरु special simple majority थला special majority. Periodical review केमती हबो every 6 months. Limit, no time limit. National emergency can continue for an indefinite period. There is no time limit for national emergency. If it is approved by Parliament every 6 months, then national emergency will continue for any period of time, provided Parliament must approve it every 6 months. And approval would be 6 special majority habo. And these amendments have been made by 44. These changes have been inserted by 44th Amendment Act. And another thing, the President can not only proclaim national emergency for the whole country, but the part of the country, 38th Amendment part of the country भी से national emergency बसई परिवे बा proclaim करी परिवे. ठीक है तो parliamentary approval गला, type of majority गला, periodical review, limit, no time limit. Revocation किए करीबो, revocation अर्थात किए उठेइबो. Revocation revocation either by president, एटा किछि दरकार नहीं, written advice किछि नहीं, revocation either by president or 1/10 member of Lok Sabha bring a resolution. 1/10 members of the Lok Sabha can revoke. If 1/10 member introduce a resolution in the Lok Sabha in this regard, then President is bound to revoke the national emergency. It was also added by 44th Amendment Act 1978. So 44th रे बहुत सारा changes है national emergency. ठीक है. बाकी जदि आ कौन रहला हम देखियो जदि इफेक्ट देखियो इफेक्ट माने इफेक्ट तीनटा फील्ड रे हुए इफेक्ट्स जो नेशनल इमरजेंसी रो प्रभावटा तीनोटी जिंस रे पड़े. गोटे ला सेंटर स्टेट रिलेशन ऊपर प्रभाव पड़े. सेंटर स्टेट रिलेशन और फंडामेंटल राइट ऊपर इंपैक्ट पड़े. फंडामेंटल राइट्स आ गोटे तुमरो टर्म of the Lok Sabha and state legislative assemblies. There are 3 effects of national emergency. One is center state relation, जो केंद्र राज्य संपर्कटा परिवर्तित हुए, जो division of power अच्छे सेटा altered हो जाए. The central government becomes more powerful during the emergency. ସେଥିପାଇଁ ଏଟା यूनिटरी प्रोविजन इमरजेंसी टा ଗୋଟେ यूनिटरी प्रोविजन्स एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आछि एवं सेंटर स्टेट रिलेशंस बा सेंटर स्टेट जो अरेंजमेंट अछि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हला बे जा हला दैट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंजेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सेटा ଗୋଟେ पॉइंट. बाकी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड. रिमेंबर व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड on the ground of war and external aggression, Article 19 is automatically suspended. Saroj, very good. National emergency is automatically suspended. When Article 19 is automatically suspended when national emergency is claimed on the basis of what? War and external aggression. Under Article 358. Article 358 रे कहूची
कि जेतेबेले नेशनल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड रे बसिबो सेतेबेले आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हबो 358 होची सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 जो फ्रीडम अछि 359 रे अदर fundamental rights may be suspended. But remember, Article 20 and 21 never suspended. 20 और 21 suspend हवनी ठीक अछि that has been added by 44th Amendment Act. The 44th Amendment Act had brought drastic changes in the emergency provisions of the constitution, especially national emergency basically ठीक अछि this is all about the terms एवं देखिले तो टाइप गुरा हमें एटा गोटे ओवरऑल सरफेस आइडिया नौचे नीलिमा 2021 yes very good so हमें एटा गोटे सरफेस आइडिया नौचे हमर जते रेगुलर क्लास गुरा जॉइन करले सेतरे हमें डिटेल्स जिबा एटा सिविल रो गोटे सिविल सर्विसेज रो हो बा जो एरर सब बहुत गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट एरिया गुरा एतरे बहुत सारा एनालिटिकल क्वेश्चन पड़े इमरजेंसी गोटे नेसेसरी इविल बेली गोटे एग्जामिन कर पड़े तो आम तो रिजन गुरा फास्ट रु कहि दीच फास्ट जो माने देखिथिबो बा जदी परे देखिबो फास्ट रे रिजन गुरा कहिची काहे कि नेशनल इमरजेंसी बसे बा इमरजेंसी काहे कि बसे दरकार कर ठीक अछि नाउ आसीबा में जोटा मेन हला जोटा हमर कहल तो तीन प्रकार इमरजेंसी बसची तापर स्टेट इमरजेंसी प्लान स्टेट इमरजेंसी तार गोटे देइची मु देखे स्टेट इमरजेंसी रे गोटे बड़ा आर्टिकल देइची पोजीशन गुरा 8 देइची भलसे देखो स्टेट इमरजेंसी रो चारटा आर्टिकल डाउन हो लुक एट द स्क्रीन there are article 355 duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbance 355 टा भी स्टेट इमरजेंसी गोटे ग्राउंड कारण से केंद्र सरकार को राज्य को बाह्य आक्रमण बा आभ्यंतरीण कौन कंदल रक्षा करिवो तेणु जदि राज्य रे किछि आभ्यंतरीण कंदल हुए बा सरकार रे अस्थिरता देखा जाए कि कौन लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हुए ताले इमरजेंसी बसिबो 356 रे हला फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट 356 exercise of legislative power under proclamation issued under article 356 365 पर ता माने नेशनल प्रेसिडेंट्स रूल बा स्टेट इमरजेंसी जो हमें कहूचे एटा दीटा मेन कारण गोटे हला हम लिखि दूची सेठी गोटे हला तुमरो रीजन्स जदी हमें देखिबा रीजन्स हला गोटे ब्रेकडाउन ऑफ constitutional machinery आउट प्लान है non compliance of the state or states with center's directives दीटा कारण मेन तो माने समरीली बा प्रिसाइजली जदि हमें पचारि कहवा कि केतरा कारण थाए दीटा कारण थाए गोटे हला जदि राज्य रे संवैधानिक व्यवस्था भुसुड़ी पड़े तुम्हें पचारिबो कि सर संवैधानिक व्यवस्था भुसुड़ी पड़िबो केमिति पिलाने सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही संविधान ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन जोटा आर्टिकल 356 रे तुमे देखि परथिबो मशीनरी जो लिखाई सेटा किछि मेंशन नाही तेनु सुप्रीम कोर्ट ताको एलाबोरेट करछन्दी बहुत केस रे तारो सेतरे बहुत सारा इश्यू आसीबो प्रोमिनेंट इश्यू ला धरा जो देयर इज एन इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट जदि सरकार रे अस्थिरता देखा अर्थात कोन सरकार रे मंत्रिमंडल बा एपट सेपट होतिबे कि तांकर चेंज होतिबो and breakdown of coalition frequently यदि breakdown होतिबो coalition गोटे coalition आसला पुणी सी भांगी कि आउट आसला सेटा गोटे एटा गोटे breakdown of coalition frequently तापर delay in the choice of chief minister यदि मुख्यमंत्री निर्वाचन करिबारे देरी हला इलेक्शन परे
तार कौन पार्टी भितर स्थिरता ना जदि गोटे राजनैतिक दल मेजोरिटी पाई कि मुख्यमंत्री हम जब डिसाइड कर पारना राज्य से गोटे डेंजर सिग्नल ठीक अच्छे तेणु डिले इन द चॉइस बा सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर तापरे डिटेरियोरेशन इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट जदि राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो जाए तो एगुरा सब होची विभिन्न कारण एवं अनसर्टेनिटी इन द कोalition गवर्नमेंट भी परिबो सो एज द टर्म इज नॉट well explained in the constitution the supreme court has elaborated the situation in many cases and in a clear manner आउ गोटे हला कोन ना नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टेट विथ सेंटर्स डायरेक्टिव्स प्लान सेंटर स्टेट को बहुत क्षेत्र रे मेनली हला दर जो मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सेटा गोटे मेन डायरेक्शन अछि बहुत सारा अच्छी कम्युनिकेशन गुरा आम सेंटर स्टेट रिलेशन रे पढ़ा ये तो प्रॉपर टाइम नहीं तुम सहित एत डील करने कारण ये क्लास गुरा मु आणुची भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट उपरे अकोमोडेट होवाई आम किंतु डिटेल्स आम पढ़ा सेटा नॉन कंप्लायंस जदि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कथा को अवमानना कले ताल सेटा बस दुईटा मेन कारण ठीक अच्छे कि चार्टा आर्टिकल रिलेटेड अच्छी 55, 56, 56, 57 आउट है 365 एटा 365 रे अछि एटा 365 नेक्स्ट आसीबा हम कोन से देखिबा ठीक अछि बाकी रो तादरे आउरी बहुत कथा रहिला तादरे सॉरी अच्छा आउटे कथा हला कोन ना प्रेसिडेंट्स रूल के बसेबो ना बाय प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी टा किए बसेब स्टेट इमरजेंसी टा प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली एटा प्राइम मिनिस्टर एडवाइस parliamentary approval parliament's approval 2 months majority simple periodical review केते मासरे अब पीरियडिकल रिव्यू 6 months लिमिट 3 years शॉर्ट रे मन रख माने जिस्ट गुरा काढी के मन रखियो सेटा हले तुमर प्रैक्टिस हे जिवो मेंस पई आ प्रीलिम पई भी काम दब तो आगे क्लियर हेले हम हम नहीं कि तो गोटे ये कॉन्सेप्ट पूरा रही तो पीरियडिकल 6 months और 3 year रही पार मैक्सिमम बट 44th रे करा गला कि आफ्टर 1 year द इलेक्शन कमिशन विल रिपोर्ट दैट इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड इन द स्टेट जदि 1 वर्ष पर इलेक्शन कमिशन कहबे कि नहीं राज्य रे से राज्य रे आ एबे इलेक्शन करी हबनी ताले सेटा 3 वर्ष जीवन न वर्ष भीतर सेटा एंड करा ठीक है ये गोटे मेजर पॉइंट तापरे इफेक्ट कौन पड़े पे इफेक्ट जदि आम देखा इफेक्ट रे दीटा पड़े गोटे स्टेट एग्जीक्यूटिव ऊपर इफेक्ट पड़ो स्टेट एग्जीक्यूटिव किए माने जो हमर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डिजॉल्व हो जाए स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व हो द चीफ मिनिस्टर विल रिजाइन स्टेट असेंबली either suspended animated suspension either suspended or dissolved दीटा प्रभाव पड़े जेहेतु स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाए डिजॉल्व हो जाए
से पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लेजिस्लेशन 357 ने जोड़ा कहूँ ऑन द स्टेट लिस्ट एंड प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट मैटर्स एट दैट टाइम जेहेतु स्टेट लेजिस्लेचर जेहेतु असेंबली डिजल्व हो जाए हुए एवं एगुड़ा प्रभाव पड़े असेंबली आइदर डिजल्व हम ना सस्पेंड हम किंतु चीफ मिनिस्टर रिजाइन एंड गवर्नर प्रेसिडेंट विल रूल इट either through the governor or any person appointed by him, either a bureaucrat or others. एवं प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 years रहिबो तार रिवोकेशन हबो प्राइम मिनिस्टर बाजू प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इट विल बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक अछि. बाकी प्रभाव गुरा कहली आउट हैला तार को स्टेट रे फर्स्ट स्टेट टू हैव प्रेसिडेंट्स रूल वाज पंजाब. प्रथम राज्य जे प्रेसिडेंट रूल अंडर आसला पंजाब. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल जदि हमें देखिबा सेटा मणिपुर हबो एवं ओडिशा हैड बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर 6 times. Telangana and Chhattisgarh are the only states which have not been under president rule till date. किए तेलंगाना और छत्तीसगढ़. तेलंगाना and Chhattisgarh have not been under president's rule since they became states. And Punjab is the first state and Manipur had been under president's rule for a maximum period of time. That is 10 years. बुझेला एटा मेन जिनस आर्टिकल गुरा भी नजर दब. ठीक अच्छे. आर्टिकल गुरा तो मुझे लिखी देछि देखा होतियो तुमको. ठीक अच्छे. नेक्स्ट आसीबा फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी प्लान फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. इटा कौन पाए टू डील विथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. Financial instability. When there is a financial crisis or financial emergency काई बसियो financial crisis and एथिरे केवल parliamentary एटा president imposed by president only on the advice of the PM. Only on the advice of PM. ठीक अच्छी. And imposed by president only on the advice of PM. तापर इटा कौन parliamentary approval से 2 months. Type of majority ला simple majority. Parliamentary approval इटा से 2 months रे हबो within 2 months from the date of proclamation. बाकी in simple majority. ठीक अच्छी. That is simple majority. But remember there is no requirement of periodical approval. आउ periodical approval दरकार नहीं financial emergency. एटा financial emergency रे periodical approval दरकार नहीं. हेटा सेमती कंटिन्यू करिवो until the situation becomes normal. So there is no need for a periodical approval. There is no need for revocation. There is no need for any other majority. Once it is imposed, it will continue until the situation is restored. And there had been no financial emergency so far in India. एपर्यंत financial emergency हैनी. In 1990, we had a situation where financial emergency became essential, but thanks to the government of India, the situation was averted and it could not be. Got it? That is the thing that you have to remember. So we have got 3 types of emergencies, and the 3 types of emergency are national emergency, state emergency and financial emergency. And हम कहीदेली डिटेल्स टिके माने माइनरली बा जो बेसिक डाटा उरा मु कहूची कारण एटा
जेहेतु यूट्यूब सेशन अच्छी एते आम एते समय ये करवानी तेणु मु गोटे ब्रीफ आइडिया दूची बट रिमेंबर इट रिक्वायर्स एन इन डेप्थ एनालिसिस ओके सो नेक्स्ट सेशन गुरा आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक आनिबा तुमरो थिला कोन सेंटर स्टेट रिलेशन गोटे टॉपिक अछि सेटा भी मु हुए तो शनिवार दिन न हो पारे तो सेटा मंडे दिन करबा सेमति कोन कोन टॉपिक ऊपर तुमे ब्रीफ सेशन चाहूछ सेटा तुमे से कमेंट रे लिखि दबो I will come prepared on that area. So always clear your doubts. Order 247 OPSC ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ସହିତ ପାଟର୍ନ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରାଇବା ତ ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରି କ୍ଲାसेस ଗୁରା ରହୁଛି ବାକି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଡିସିସନ୍ ଅଛି ବା ତୁମେ ଯଦି कोचिंग किसी नहीं न बा तुम्हें सिविल रे कैरियर प्रिपेयर करिया को चाहूछ तले हमर विभिन्न क्लास गुरा जॉइन करो ठीक अछि बेसिकली द वॉरियर ओडिशा ओपीएससी ओसीएस लाइव फाउंडेशन बैच गोटे हम कराई छी सेटा कि जोतरे आई एम आल्सो टीचिंग इन दैट बैच एंड एमिनेंट faculties also will take the class entire subject cover of GS1 GS2 GS3 GS4 आउ जनरल इंग्लिश भी रहिबो त से तो किछि ऑप्शनल भी हमें दबु पीएसआईआर ऑप्शनल अछि ठीक अछि तो एटा जॉइन करो एवं एटार प्राइस बहुत कम रही है एटा अफोर्डेबल प्राइस अछि 9118 रे तेणु तुम मैंने सेटा को मो कोड जो अच्छी देखि परती Y963 यूज कले तुम सेटा डिस्काउंट भी पाइबो आ छड़ा गोटे नो आवर ओडिशा गोटे कोर्स लॉन्च होउची ठीक अछि यस 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 ओडिशा गोटे लॉन्च होउची ओडिशा रो जो एंटायरिटी ऊपर हमें गोटे मु गोटे क्लास करिवे सेटा 5 to 6 मंथ्स भीतर क्लासटा रहिबो ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा जियोग्राफी ओडिशा पॉलिटी ऊपर विभिन्न डाटा रहिबो सो जते शीघ्र तुम माने जॉइन कले से क्लासटा को आरंभ करिवा ठीक अछि बाकी जहाँ जहाँ टॉपिक दरकार होची दरकार होची जो जो टॉपिक ऊपर से टॉपिक तुम्हें जंती मेसेज लिखुछ सब सेमती लिखिबो आमे भिन्न भिन्न एरिया ऊपर काम करिबा जोटा करंट रे अछि जो पॉलिटिकल एरिया गुरा अछि से गुरा सब देखिबा जंती जम्मू कश्मीर इलेक्शन हला कि वन नेशन वन इलेक्शन मु लास्ट गोटे क्लास नैथिली वन नेशन वन इलेक्शन से कौन कौन अमेंडमेंट हम कौन कौन प्रोब्लेम रही नहीं एगुरा सब टी नजर कले मेनली कौन एगुरा ए क्लास खाली नुह जे तुमको खाली क्वेश्चन पड़े मिल ए तुम माइंड ब्रॉडेन हम एवं तुम आउटलुक बढ़ एवं तुम्हें किसी गोटे कैपेबल हम बुझापी तेणु क्लास गुरा सब जॉइन कर वीडियो वॉच कर ठीक अच्छे आम कल लास्ट गोटे माराथन मु करी पॉलिटी जो मैंने प्रिलिम दौरान से भारी खुशी थे कि सार बहुत आलोचना कर पुणी सैटरडे दिन भी आम गोटे माराथन आणुचु माने 4 घंटिया माराथन 3टा ରୁ 7टा पर्यंत तो भलसे रेडी के आसब जो मैंने प्रिलिम ओरिएंटेड अच्छ से मैंने आसी बस क्लास कर एवं जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छ सिविल सर्विस पे से माने भी से क्लास कर क्वेश्चन नेचर गुरा जानी परिबो तो यहाँ तुमको यूपीएससी जाए भी हेल्प करियो ठीक है पिलाने तो यहाँ में आज इमरजेंसी ऊपर गोटे शॉर्ट क्लास नेले एवं एमती बहुत सारा क्लास मु प्रतिदिन पाखापाखि रेगुलरली आणुची तो सेगुड़ा से एनालाइज कर कौन मेरिट रोचे कौन बेनिफिट होना ना कि सेटार किसी असुविधा कौन होची आउ कौन दरकार से सब कमेंट बॉक्स रे लिख आई विल डेफिनेटली जज योर कमेंट एंड अमेंड अकॉर्डिंगली ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब।